LawSikho's thorough newspaper analysis for 21st September 2023. Now, starting with the today's agenda, हम लोग editorial portion discuss करेंगे पहले, which talks about 73rd and 74th Amendment, which first introduced reservation for women in elected bodies, जो कि हमने Indian Express से लेके रखा है. Now, then we will discuss about the news update. News update में हम बात करेंगे national news, international news, important days, awards and sports. And lastly, the legal news update which is coming from the Honorable Supreme Court and the Honorable High Court of India. चलिए पहले हम डिस्कस करते हैं 73rd and 74th Amendment which first introduced reservation for women in elected bodies. जिस तरीके से हमारा पैटर्न है एडिटोरियल सेशन का, हम लोग पहले कॉन्टेक्स्ट समझते हैं दैट व्हाट दैट पर्टिकुलर एडिटोरियल इज टॉकिंग अबाउट. उसके बाद वो पर्टिकुलर एडिटोरियल की हम बात क्यों कर रहे हैं, व्हाई आर वी टॉकिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर एडिटोरियल एंड द फ्यूचर अहेड, द वे अहेड. सो लेट अस टॉक अबाउट द कॉन्टेक्स्ट. नाउ, जैसा कि आप लोग अभी जानते ही हैं कि रिजर्वेशन फॉर वुमेन इज अ हॉट टॉपिक. It is an ongoing debate in the Lok Sabha as well as in the Rajya Sabha. Now let us understand the 73rd and 74th Amendment and its context to the present situation. Chale. Now, the government on Tuesday, September 19th, introduced the Constitution 128th Amendment Bill 2023. इसको नोट करिएगा कि 128th अमेंडमेंट बिल 2023 के बेसिस पर गवर्नमेंट ने ट्यूसडे को एक बिल इंट्रोड्यूस करा टू रिजर्व 33% सीट्स फॉर वुमेन इन लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. ये पर्टिकुलर अमेंडमेंट को याद रखिएगा विच विल बी वेरी हेल्पफुल इन योर जुडिशरी एग्जाम्स प्रिलिमिनरी पेपर. The quota will be applicable to the reserved seats for SCs and STs as well. Now, several years before the bill was first brought in the parliament by the government of Prime Minister H.D. Deve Gowda, two breakthrough amendments were brought to the constitution. और वो जो amendment लाए गए थे, what they resulted? They resulted in reservation for women in rural and urban local bodies. Now, let us understand the crux of this particular amendment जो लाए गए थे. The Constitution 73rd and 74th Amendment Act enacted when P.V. Narasimha Rao was Prime Minister. What the particular amendment mandated? The reservation of 1/3 of seats for women in panchayati raj institutions and offices of chairperson at all levels of panchayati raj institution and in urban local bodies respectively. Both amendments were passed by the parliament in December 1992 and which took effect in April 24th, 1993 and June 1, 1993 respectively. Now, जो ये अमेंडमेंट 73rd और 74th अमेंडमेंट लाए गए थे पीवी नरसिम्हा राव जब प्राइम मिनिस्टर थे उनके ड्यूरेशन में, तो इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट का बैकग्राउंड क्या था? इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट का बैकग्राउंड कमेटी के फॉर्मेशन पे हुआ था. पहली थी बलवंत राय मेहता कमेटी जो 1957 में द कमिटी रिकमेंडेड दैट एन एजेंसी शुड बी सेट अप एट अ विलेज लेवल व्हिच वुड रिप्रेजेंट द विलेज कम्युनिटी इंटरेस्ट and carry out the government development program. इस कमेटी ने ये सजेस्ट करा that the early establishment of elected local bodies and the devolution of necessary resources, power and authority to them. Now, दूसरी कमेटी कौन सी इंपॉर्टेंट थी? अशोका मेहता कमेटी. In 1977, the committee suggested changing the concept of panchayati raj to a political institution. The committee observed that Panchayati Raj institution had failed to live up to their promise and suggested measures to strengthen the system. It identified an unsympathetic bureaucracy, absence of political will, and lack of clarity over the institution's role as the reasons for its undermining. Now, Karnataka, West Bengal, Andhra Pradesh,
passed new law based on Ashoka Mehta Committee report. An attempt was made to strengthen Panchayati Raj institution across the country through the Constitution 64th Amendment Bill at a fag end of Prime Minister Rajiv Gandhi's term in 1989. But the attempts was defeated in राज्यसभा. तो इस पर्टिकुलर एडिटोरियल में हमें 73rd और 74th अमेंडमेंट किस दौरान लाए गए, सेकेंडली क्या उसने सजेस्टिव मेजर्स दिए, एंड थर्डली इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट के बैकग्राउंड में कौन सी दो कमेटी, बलवंत राय मेहता कमेटी एंड अशोका मेहता कमेटी इन्वॉल्व थी. नाउ द 73rd and 74th Constitution Amendment Act established local self governance in rural and urban India respectively. ये बहुत ही एप्ट क्वेश्चन है जुडिशियल सर्विसेज के लिए. प्रिलिमिनरी एग्जाम में ये बहुत बार आ चुका है कि 73rd एंड 74th अमेंडमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन के हुए हैं वो किस बेसिस पर हुए हैं. पहला, क्या उनके कमेटी के नाम है, एंड थर्डली वो पर्टिकुलर अमेंडमेंट में क्या क्या चेंजेस लाए गए थे. नाउ द टू अमेंडमेंट वर एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन. कहाँ कहाँ ऐड हुए थे ये पर्टिकुलर दो अमेंडमेंट? पार्ट 9 जिसको टाइटल दिया गया द पंचायत्स, एंड पार्ट 9A जिसको टाइटल दिया गया द म्यूनिसिपैलिटीज. Following the amendment, panchayats and municipalities were termed as institutions of self-government. The Gram Sabha became the basic unit of democratic system in villages. In municipalities, the term ward committee was used. This body is consisted of all adult citizens registered as voters, and the panchayat or the municipality was made accountable to them. Now, इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन और एक बहुत इंपॉर्टेंट फेज भी था जिसे डायरेक्ट इलेक्शंस बोला गया. डायरेक्ट इलेक्शंस ऑफ ऑल थ्री टायर्स ऑफ गवर्नेंस, दैट इज ग्राम पंचायत एट विलेज लेवल, तालुका और ब्लॉक पंचायत एट इंटरमीडिएट लेवल, एंड जिला पंचायत और परिषद एट डिस्ट्रिक्ट लेवल वर इंट्रोड्यूस्ड. स्टेट्स विद पॉपुलेशन ऑफ लेस देन 20 लाख वर एग्जम्प्टेड. नाउ अब हम बात करते हैं, आउट ऑफ द टोटल 1/3 सीट्स रिजर्व फॉर वुमेन, 33 मतलब 33% had to be reserved for the scheduled caste and the scheduled tribe. Importantly, 1/3 of the seats of office bearers and the chairpersons at all level had to be reserved for women as well. कितने टर्म का टाइम पीरियड था? 5 year. ये क्वेश्चन है जुडिशियल सर्विसेज का. A 5-year tenure was prescribed for each body, and elections to the successor body had to finish before the previous body term expired. In case of the body's dissolution, an election had to be conducted within 6 months compulsorily. Now, a very important commission was also set up. There would also be a state election commission in each state for superintendence, direction and control of the electoral rolls for this election. Now, under Article 243G, panchayats were tasked with preparing plans for economic development and social justice on subjects in the 11th schedule, including agriculture, land, irrigation, animal husbandry, fisheries, cottage industries, and drinking water. तो ये पर्टिकुलर एडिटोरियल का क्या कॉन्टेक्स्ट था? 73rd और 74th अमेंडमेंट क्या, what it talks about, how it was introduced, on what basis of the committee it was introduced, it is explained in this editorial. Now let us move on to the national news of the day. Okay, now let us start with the national news of the day. Hoysala Temples in Karnataka, now India's 42nd UNESCO World Heritage Site. PM says more pride. Now let us understand what are Hoysala Temples and इस particular tag का significance क्या है. The sacred ensembles of the Hoysala, which include 3 temples of Belur, Halibib and Somantipura in Karnataka, has been inscribed on the UNESCO's World Heritage List. Now, it is the 42nd UNESCO's World Heritage Site. It can be a very good question for your preliminary examination. It is the 42nd UNESCO World Heritage
site. Also on Sunday, Rabindranath Tagore Shanti Niketan, the university town in West Bengal, was included as a World Heritage Site as well. Now, let us understand what is the significance of this particular tag. According to UNESCO, when a country becomes a signatory to the World Heritage Convention and has its sites inscribed on the World Heritage List, it often brings about increased recognition and appreciation for heritage preservation among both its citizens and the government. Coming on to the next national news, fashion designer Rahul Mishra awarded Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres. It's a French language terminology. The first Indian designer to participate in the Paris Haute Couture Weekend 2020, Rahul Mishra received the French government's award, which is Knight of the Order of Arts and Letters honor, an award previously won by its compatriots Ritu Kumar, Ritu Beri, Wendell Rodrigues, and Manish Arora. Now, let us understand about what is this honor and award about. The French government distinction L'Ordre des Arts et des Lettres, which is Knight of the Order of Arts and Letters. Please, apologies if I'm not pronouncing it correct, is bestowed upon persons who have been distinguished themselves by their creativity in the field of art, culture, literature, or for their contribution to the influence of arts in France and throughout the world. चलिए अब नेक्स्ट नेशनल न्यूज पे चलते हैं. धनंजय जोशी अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ टेलीकॉम इंडस्ट्री बॉडी DIPA. अब पहले समझते हैं कि DIPA क्या होता है. DIPA, Digital Infrastructure Providers Association, has been appointed Dhananjay Joshi. क्या बने हैं? MD and CEO of Sumit Digital as the chairman. Dhananjay Joshi takes over the baton from Akhil Gupta, the chairman of Bharti Enterprises, who served as chairman of the industry body since 2011. Now, ये changes कब तक affect होंगे? Will come into effect from 1st October. The telecom industry body concluded its annual general body meeting for 22-23 with the announcements of its leadership for the term 23 and 24. धनंजय जोशी का नाम याद रखिएगा. चलिए next national news, Indian government launched the Kisan Rin Portal with the weather portal Wind. श्रीमती निर्मला सीतारमन कौन है वो? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर. एंड श्री नरेंद्र सिंह तोमर वो कौन है? यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर. देखिए बहुत छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी से छोटे छोटे डेजिग्नेशन है, बट आपको ये याद रहने चाहिए. ये आपको एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से भी एज वेल एज इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से भी काम आएंगे. अनवीर इनिशिएटिव फोकस्ड ऑन एग्री क्रेडिट एंड क्रॉप इंश्योरेंस. चलिए अब मिनिस्टर्स ने क्या इनॉग्रेट करा? Kisan Rin Portal, which aims to give farmers subsidized loans under the Kisan Credit Card scheme to revolutionize the agricultural sector in the country. देखिए अब इन्हें 3 इनिशिएटिव को लॉन्च किया. कौन कौन से? किसान ऋण पोर्टल पहला, दूसरा KCC घर घर अभियान, an ambitious campaign aiming to extend the benefits of Kisan Credit Card scheme, और तीसरा कौन सा? A manual on weather information network data system. चलिए अगला national news, Odisha to launch bus service connecting gram panchayat with state capital. On this Gandhi Jayanti, कब है? 2 अक्टूबर को the Odisha government would launch a bus service that would connect each of the 6794 gram panchayats in the state to their block and district headquarters town and the state capital भुवनेश्वर. ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है जो ओडिशा गवर्नमेंट ने लॉन्च करा है, जो इस 2 अक्टूबर को लॉन्च हो जाएगा. The project name Location Accessible Multi-Modal Initiative would see 1000 Odisha State Road Transport Corporation buses running from Gram Panchayat to block to district headquarters and district headquarters to the state capital. चलिए
अब द बस कनेक्टिंग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स टू स्टेट कैपिटल वुड बी नेम्ड जगन्नाथ एक्सप्रेस। ये याद रखिएगा, जो बसेस कनेक्ट करेगी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स को स्टेट कैपिटल से, उसका नाम क्या दिया गया है? जगन्नाथ एक्सप्रेस। while those connecting district headquarters from town to panchayat would be called लोकेशन एसेसिबल मल्टी मॉडल इनिशिएटिव एक्सप्रेस। तो ये जो लास्ट पॉइंटर है वो आपके याद रखने की चीज है आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से। देखिए, बहुत छोटे छोटे टर्मिनोलॉजीज होती है जिससे हम चीजों को याद रख सकते हैं। आने वाले टाइम में हम निमोनिक्स का भी यूज करके आपको लर्न कराने की कोशिश करेंगे। आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा, क्या आप चाहते हैं कि हम निमोनिक्स का यूज करके आपको कुछ टर्मिनोलॉजीज को लर्न करवाएं साथ साथ ये प्रेजेंटेशन के? जरूर बताइएगा। चलिए, अगली नेशनल न्यूज। ऑन इंडिया फर्स्ट सोलर मिशन आदित्य L1 बिगिंस कलेक्टिंग डाटा, इसरो। देखिए, पहले हम समझते हैं कि आदित्य L1 का प्रोजेक्ट क्या है। आदित्य L1 कब लॉन्च हुआ था? 2 सितंबर को। किस तरीके से लॉन्च हुआ था? यूजिंग अ पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल विच वाज PSLV C57 फ्रॉम श्रीहरिकोटा। ठीक है, चलिए। ऑन ट्यूसडे आदित्य L1 लेफ्ट अर्थ ऑर्बिट एंड बिगिन अ 110-day journey to L1 point. The spacecraft will remain in the trans-Lagrangian point 1 trajectory for 110 days before being inserted into an orbit around the point where the gravitational pull of the sun and the earth on the spacecraft will be completely balanced. चलिए, अब आदित्य L1 इंडिया का फर्स्ट स्पेस मिशन है जो सन को स्टडी करेगा, and it has been collecting data by developing one of the 7 instruments on board on Monday, a day before its departure from the Earth orbit. देखिए, इस पर्टिकुलर स्लाइड में हम लोग जितनी भी इंफॉर्मेशन देते हैं वो एक एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं, ताकि अगर आपके एसे में या आपके मेंस के आंसर राइटिंग में आपको कहीं पर भी हेल्प कर पाए, जीएस का पेपर जो आता है अगर उसमें भी हेल्प कर पाए तो आप लिख सकें। तो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर योर एसे राइटिंग ऑल्सो। तो अगर आप इसे कंटिन्यूस 2-3 बार पढ़ेंगे, इस पर्टिकुलर स्लाइड को 2-3 बार देखेंगे, तो आपके अंदर एक इंफॉर्मेशन फीड होना चालू हो जाएगी। और मैं अब ये ट्राई कर रही हूँ कि आपको एक स्टोरी फॉर्म में बताऊं दैट हाउ दिस पर्टिकुलर स्टोरी विल बिगिन। चलिए, नेक्स्ट नेशनल न्यूज। ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग टू बी कॉल्ड एज संविधान सदन। ओके, ये याद रखिएगा, जो जो हमारी ओल्ड पार्लियामेंट की बिल्डिंग है उसे क्या बोला जाएगा आपसे? संविधान सदन। द प्राइम मिनिस्टर अनाउंस द न्यू नेम ऑफ द ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग विच विल बी कॉल्ड एज संविधान सदन Constitution House. Both Lok Sabha Speaker and the Rajya Sabha Chairman accepted the proposal made by Prime Minister just before the House. Both Lok Sabha Speaker and Rajya Sabha Chairman announced the decision in the Parliament. In the evening, the Lok Sabha Secretariat notified the decision. चलिए, अब ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग जिसको क्या बोला जाएगा? संविधान सदन। किसने डिजाइन किया था? इट वॉज डिजाइन बाय ब्रिटिश आर्किटेक्ट एडविन ल्यूटनेंस एंड हर्बर्ट बेकर एंड वॉज कंस्ट्रक्टेड बिटवीन 1921 and 1927. The old parliament has witnessed debates on the making of the constitution, the aftermath of the announcement of the death of the Mahatma Gandhi, and thumping of desk when then Prime Minister Indira Gandhi announced the unconditional surrender of Pakistan forces in Bangladesh. चलिए, अब डू टेल मी इन द कमेंट बॉक्स आपके टीएनए क्वेश्चंस ऑफ द डे। व्हेन डिड द फर्स्ट लोकसभा इलेक्शन टेक प्लेस? एंड सेकंड क्वेश्चन, what are the provisions of the Indian Constitution which came into force immediate before the date of the Constitution came into the effect? Or third but last question, what is that date when the Constitution came into effect? ये जरूर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिएगा, बताइएगा कमेंट बॉक्स में। दिस विल हेल्प यू टू इफेक्टिवली एंड इन द हेल्दी मैनर लर्न मेनी थिंग्स। देखिए, छोटी छोटी चीजों से ही बहुत सारी चीजें सीखेंगे। अगर आप एकदम से एक बार में पूरी बुक को पढ़ने की कोशिश करेंगे तो कुछ ना कुछ मिस होगा। तो जरूर ये क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिएगा। चलिए, नेक्स्ट न्यूज ऑफ द डे।
10th meeting of India Malaysia Joint Subcommittee on Defense Science Technology Industry Cooperation held in न्यू दिल्ली। अब इसमें क्या लर्न करने की बात है, इसमें एक तो प्लेस और कौन सा नंबर, विच इज द 10th मीटिंग, किसकी मीटिंग है वो, इंडिया मलेशिया सॉरी सब जॉइंट सब कमिटी ऑन डिफेंस साइंस टेक्नोलॉजी। ठीक है, चलिए। अब द मीटिंग वाज को-चेयर्ड बाय जॉइंट सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस श्री राजीव प्रकाश, अंडर सेक्रेटरी डिफेंस इंडस्ट्री डिवीजन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस मलेशिया मिस्टर एरिस जेमादी बिन ताजुब बिन। Now, during the meeting, the existing defense research and industry cooperation between the two countries was reviewed and discussions were held on issues pertaining to mutual interest. चलिए, अब जब हमने बात करी कि इंडियन मलेशियन की जॉइंट मीटिंग हुई है जिसमें वो डिफेंस साइंस टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि इंडिया और मलेशिया के टाइज कैसे रहे हैं। India established diplomatic relations with the Federation of Malaya, that is predecessor state of Malaysia, in 1957. Malaysia is represented in India through their High Commission in New Delhi and Consulates General in Mumbai and Chennai. Malaysia is one of the most important countries for India's Look East policy and Act East policy. तो ये आपको बात याद रखनी है यहाँ पर। चलिए, अब नेक्स्ट नेशनल न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। अरुणाचल प्रदेश पेमा खांडू अनाउंसेस मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना। चलिए, अब इस चीज को देखते हैं कि मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना क्या है। आपको नाम से लग रहा होगा कि इट इज रिलेटेड टू सम लेबर डे, तो यही रेफरेंस है, याद रखिएगा इस न्यूज को। मार्किंग द नेशनल लेबर डे सेलिब्रेशंस, अरुणाचल प्रदेश चीफ मिनिस्टर Pema Khandu announced rollout of a new scheme titled मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना स्कीम। किसके वेलफेयर के लिए? लेबर फोर्स के वेलफेयर के लिए। चलिए, अब इस स्कीम में क्या क्या बेनिफिट है। मटर्निटी बेनिफिट फॉर फैमिलीज ऑफ वर्कर्स हैज बीन एनहांस्ड फ्रॉम 1000 to 6000। नेचुरल डेथ का जो कंपेंसेशन पहले था वो 50,000 था, अब 2 लाख हो गया। एक्सीडेंटल डेथ कंपेंसेशन पहले 1 लाख था, अब 4 लाख हो गया। फ्यूनरल असिस्टेंस पहले 1,000 दिया जाता था, अब 10,000 दिया जाएगा। मेडिकल असिस्टेंस पहले 2,000 था, अब 5,000 हो गया है। प्रॉपर्टी डैमेज ड्यू टू नेचुरल कैलामिटी कंपेंसेशन हो गया है 10,000। He further announced that the state government will also pay the premium of rupees 200 per head per month on behalf of worker opting for अटल पेंशन योजना। तो ये एक गवर्नमेंट स्कीम आई है जो कौन सी स्टेट ने लाया है? अरुणाचल प्रदेश ने। चलिए, नेक्स्ट नेशनल न्यूज। ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी ऑफ वोलगोंग टू एस्टैब्लिश गिफ्ट सिटी कैंपस इन बाय 2024। चलिए, ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी ऑफ वोलगोंग, जिसे UOW भी कहा जाता है, इज गोइंग ग्लोबल विद द न्यू कैंपस सेटअप टू बी लॉन्च्ड इन गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, जिसे क्या बोला जा रहा है? गिफ्ट सिटी, इंडिया बाय जुलाई 2024। अब हम गिफ्ट सिटी के बारे में पढ़ते हैं। गिफ्ट सिटी इज एन एमर्जिंग global financial and IT services hub, a first of its kind in India, designed to be at or above par with globally benchmark business district. It is supported by state-of-the-art infrastructure encompassing all basic urban infrastructure element along with excellent external connectivity. चलिए, next national news. IIT Gandhinagar wins International Green University Award 2023. IIT, Indian Institute of Technology Gandhinagar, has won International Green University Award 2023. The award has been presented by Green Mentors USA, a non-governmental organization with special consultative status with the United Nations Economic and Social Council. चलिए, अब हम बात करते हैं यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के बारे में। ये क्या है? ये इज एट द हार्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिस्टम
to advance the three dimensions of sustainable development: economic, social, and environmental. It is the central platform for fostering debate and innovative thinking, forging consensus on way forward, coordinating efforts to achieve internationally agreed goals. यूएन चार्टर ने इसे कब स्टैब्लिश किया था? 1945 में. ये आपके एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा. एंड एज वन ऑफ द 6 मेन ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन. चलिए नेक्स्ट नेशनल न्यूज की तरफ. अब इंटरनेशनल न्यूज की तरफ चलते हैं. जस्टिस काजी फेज ईसा स्worn इन एज द 29th चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान. ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसे ध्यान से पढ़िएगा और इसे याद करिएगा. जस्टिस काजी फेज एजा was sworn in as the 29th चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान. उनका टर्म 13 महीने का है और विल बी एंडिंग ऑन अगले साल 2024 में 25 अक्टूबर को. Justice Isa, 63, was sworn in by President Arif Alvi at a ceremony held at Aiwan-e-Sadr in Islamabad in the presence of caretaker Prime Minister Anwar al-Kakkar, Chief of Army Staff General Asim Munir, ministers and other senior officials among others. आपने अभी कुछ दिन पहले का टीएनए देखा होगा, तो हमने ये केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर के बारे में भी बात करी थी. चलिए अब जस्टिस ऐसा के बैकग्राउंड के बारे में बात करते हैं. अब आप बोलेंगे कि मैम जस्टिस ऐसा के बैकग्राउंड के बारे में हमें क्यों जानना जरूरी है? देखिए हम लोग इतनी सारी इंफॉर्मेशन पाते हैं, कुछ ना कुछ हमें एलिमेंट जरूर चाहिए होगा उसे याद करने के लिए. या तो आप उनके बारे में पढ़िए तो आपको जल्दी से उसे लर्न करने में आसानी होगी. वो एक एडवोकेट थे इन बलोचिस्तान हाई कोर्ट इन 1985 एंड लेटर बिकेम एन एडवोकेट एट सुप्रीम कोर्ट इन 1998. He practiced law in Balochistan High Court and Supreme Court for over 27 years before being appointed as the Chief Justice of Balochistan High Court. चलिए next national news. Process and Naspers CEO Bob Van Dijk steps down abruptly. Zomato hits 52-week high. Bob Van Dijk has stepped down as the CEO and board member of Dutch-listed technology investment firm Process and its parent South African conglomerate Naspers. अब इसके आगे की बात करते हैं. Van Dijk will remain as an advisor to both the boards till September 30, 2024 to support through the transaction. Now, what his term had for us in India. Process under Van Dijk has invested over $10 billion in India and is one of the largest investors in the country. Its portfolio includes investment in top startups such as Swiggy, Flipkart, Urban Company, Byju's, Meesho, and others. Process fintech arm PayU is one of the biggest online payment processors in the country. So, chaliye. Next international news. NASA Parker solar probe gets closest to sun, spends 2 days in solar storm. NASA Parker solar probe has marked a historic milestone by becoming the first spacecraft to fly through the coronal mass ejection directly from the sun, a colossal eruption which expels billions of tons of plasma. चलिए ये कब लॉन्च हुआ था? Launched in August 2018, this mission performed on-site observation, the closest ever for 2 consecutive days during an event of interplanetary CME reported in September last year. चलिए अब समझते हैं कोलर मास इजेक्शंस क्या हैं. They are violent bouts of gaseous matter and magnetic field thrown outward from the sun's outer atmosphere, the corona. CMEs eject billions of tons of plasma at speed ranging from 100 to 3000 kilometers per second. Designed and built by Johns Hopkins Applied Physics Laboratory, the front of the probe heat shield can withstand extreme high temperature as it gets closest to the sun. Chaliye. Next international news. Scientists in China develop new artificial liver based on human cells.
चलिए, scientists in China have developed a new bio-artificial liver that can help patients with liver failure survive long enough for an organ transplant. अब ये जो एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है, ये आप इसे जरूर पढ़िएगा, ये आपको हेल्प करेगी इस पर्टिकुलर पूरे न्यूज के बारे में एक ओवरऑल व्यू देने के लिए। टीएनए क्वेश्चन देखते हैं आज का। विच स्टेट recently received the award for the best state organ and tissue transplant organization on the occasion of 13th Indian Organ Donation Day? तो आप इसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा and we will give you a congratulatory message in next TNA. चलिए, next international news. Carlos Sainz wins Singapore Grand Prix as Max Verstappen and Red Bull streak end. अब आप इधर एक बोर्ड देख रहे होंगे, विनर्स बोर्ड। कार्लोस सेंस फर्स्ट पे है, इनकी टीम का नाम क्या है? फरारी। ठीक है, ये है स्पोर्ट्स न्यूज आज की। चलिए, अब बात करते हैं हम लीगल अपडेट की। लीगल अपडेट coming from the Karnataka High Court. Doctrine of state humanity doesn't cover acts done by public servant for her, his own benefit or pleasure. ये पर्टिकुलर केस का नाम है डी रूपा एंड रोहिणी सिंधूरी। चलिए, the Karnataka High Court has refused to quash the defamation complaint lodged against IPS officer D Rupa by IAS officer Rohini Sindhuri for allegedly publishing defamatory content against her. अब हम समझते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ स्टेट ह्यूमैनिटी क्या होता है। डॉक्ट्राइन ऑफ स्टेट ह्यूमैनिटी covers all the acts performed by a public servant in exercise of function of the government and not where acts are done by the public servant for her or his own benefit or pleasure and may be under the power of authority. Such acts will not fall under the immunity principle. The bench observed while further adding this. अब हमें समझना पड़ेगा, the scope of operation of section 197 of CRPC is restricted to only those acts or omission which are done by a public servant in discharge of official duty. ये जो इटैलिक्स में पोर्शन लिखा हुआ है, ये पूरा की पूरा एक हाईकोर्ट की रूलिंग है, तो आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। चलिए, coming up to the next national legal update. Indian Council of Arbitration and Vienna International Arbitral Center forged strategic partnership with MOU signing. चलिए, the Indian Council of Arbitration in New Delhi, India, and the Vienna International Arbitral Center of the Austrian Federal Economic Chamber entered into a MOU via an online meet reflecting upon the use of modern technology in the field of arbitration. अब MOU के highlights देख लेते हैं। This MOU represents a strong display of solidarity between two leading international arbitral institutions dedicated to promoting and facilitating the utilization of arbitration in resolving cross-border commercial dispute spanning across the sectors. तो ये एक बहुत बड़ा MOU साइन हुआ है जो आर्बिट्रेशन को एक बहुत बड़ा बूम देगा। चलिए, नेक्स्ट लीगल अपडेट। SC and NALSA, which is National Legal Services Authority, launch Under Trial Review Committee Special Campaign 2023 to expedite release of under trial prisoner. चलिए, क्या लॉन्च हुआ है? सुप्रीम कोर्ट और नालसा ने एक अंडर ट्रायल कैंपेन लॉन्च करा है जो रिलीज ऑफ अंडर ट्रायल प्रिजनर्स के लिए होगा। अब इस कैंपेन का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? टू स्ट्रीमलाइन and bolster the functions of under trial review committee which were established following the directives of Supreme Court back in 2015. ठीक है, as per the Supreme Court press release, over the 5 years the UTRC, that is under trial prisoners, have reviewed cases and issued recommendation resulting in the release of more than 91,000 plus prisoners nationwide out of total over 2 lakh inmates. चलिए, that's all for today's news update and the editorial session. Do subscribe our channel and keep supporting and keep sharing. Thank you so much.